everyone, Namaskar, Sat Sri Akal, kya hal chal? I hope everyone is safe, healthy and staying indoors. So in today's video, I'm going to show how you can create a no makeup look, that too in within 15 minutes. 15 minutes में आप कैसे एक bright and shining look create कर सकते हैं which can be used for everyday purpose. मैं आपके साथ कुछ tips and tricks भी share करूंगी जो आपका मेकअप एकदम flawless बनाने में आपकी help करेगा. So do watch it till the end. If you like this video, do give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. So, without wasting any further time, let's dig into the video. So, सबसे पहले अपने बालों को पीछे करते हैं so that we can see our face completely. किसी भी मेकअप से पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Here I am using Pond's. This is a wonderful cream and बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है. I personally like to use primer. This is a pore minimizing primer from Sugar. ये एक लेयर क्रिएट करता है बिटवीन मेकअप एंड स्किन जिससे मेकअप आपके क्रीज एंड पोर्स में सेटल नहीं हो पाता. इसका टेक्सचर काफी सिलिकॉन बेस्ड है एंड ये एक परफेक्ट बेस क्रिएट करता है फॉर मेकअप. Next, I'll be using Elegirl Pro Concealer in the shade Pure Beige. This will cover all the dark areas and marks that I have on my face. इसे बहुत ही अच्छे से blend करना है and for that I'm using a damp beauty blender. A small tip here guys, कभी भी आप dry beauty blender ना use करें, हमेशा उसे पानी से हल्का गीला करके और squeeze कर लें. Another tip guys here, you don't have to drag the concealer while using the beauty blender. आपको इसे डैप करना है अपने स्किन में एंड डैप करते हुए पूरे फेस पे ब्लेंड करना है. Next, I'm going to use my highlighter concealer to highlight all the high points of my face. This is from Swiss Beauty in the shade 02. Guys, ये बहुत ही affordable and amazing concealer है and इसका coverage थोड़ा medium है. Since this is a no makeup look, I'm not going to use foundation today. इतने अच्छे टिप्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. I will set my base with Maybelline loose powder in the shade 15 light. अगर आपके पास कोई compact powder है you can use that as well. Time to move to the eyebrows. I like using brow definer since it gives a definition to my face. But this is a completely optional step guys. I will not line my brows but just fill in all the gaps. First we'll brush it downwards, fill in all the gaps and then brush it upwards to see if anything is missing. मैं अपनी eyebrows को बहुत natural look देना चाहती हूँ. मैं उसे बहुत ज़्यादा define नहीं करती हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा line करती हूँ. See how it changes your entire look. For eyeshadow, I'm taking this Maybelline eyeshadow palette. This is a perfect neutral shade for everyday use. मैं अपने fingers को ही use करूँगी to put my eyeshadow. आपको ये eyeshadow अपनी fingertip पे लेके हल्के outer corner of your eyes पे लगाना है. थोड़ा सा आप बाहर stretch कर सकते हैं so that आपकी eyes थोड़ी और बड़ी लगे. Now I'm taking another lighter shade और इसे मैं अपने inner corners पे लगाना शुरू करूँगी of my eyelids. The key to get a perfect eyeshadow is to blend. जितना आप blend करेंगे अपने eyeshadow को उतना ही flawless और smooth look आएगा. So keep blending. Now I'm going to just brush off if there is any excess eyeshadow which is on my face. Okay, now let's come to the eyeliner. Okay, let me be honest. I take eternity to put that perfect liner. So here I am using the eye kajal from K Beauty as a liner.
आपको वो परफेक्ट लाइन डिफाइन नहीं करनी है बिकॉज वी एनी विच वे इज गोइंग टू स्मर्श द काजल. Remember the spoolie that we get with every eyeshadow palette and wonder कि इसका करना क्या है? Let's use the same to smudge the kajal. For lower lash line, I will use the same kajal but just halfway from outer corner to the middle of the lower lash line. And using the same spoolie, we will smudge this as well. Let's move to mascara, but before that, I like to curl my lashes. This is an optional step guys, but ये बहुत ज़्यादा difference create करता है before using a mascara. I'm using K-Beauty mascara. I've recently started using mascara and kind of loving it. Okay, now I'm done with my eyes. For contouring, I'm using the Color Bar Contouring and Highlighter Palette. आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, कॉन्टोरिंग से एक नेचुरल शैडो क्रिएट हो जाता है विच यूजुअली गोज अवे व्हेन यू डू योर बेस. कॉन्टोरिंग बेसिकली यूज करते हैं टू इलोंगेट योर फेस, जिससे आपके फीचर्स और शार्प लगते हैं. I will be using it above my jawline to define my jawline and on nose to give it that sharp look. Start with less product and then build it according to your need. अगर आपके पास contour brush है तो you can use that, else you can also use your beauty blender to do the contouring. इतने सारे steps देख के आप कहोगे रिचा ये मेकअप कैसे 15 मिनट में होगा, but trust me guys, once you get the hands on this, ये hardly 10 मिनट का काम है. For blush, I am using Faces Canada in the shade Coral Pink. This has a light shimmer and it's a natural looking shade. ये सारे skin tone पे बहुत सूट करेगा. Highly pigmented formula, so use it only after dusting your brush. It has amazing formula which stays on for a very long time. For moving on to the next step, let me set my base. I am using Makeup Fixer by Swiss Beauty. I recently got my hands on this since this product had amazing reviews on Nykaa. फिक्सर यूज करने के दो फायदे हैं. एक तो आपका मेकअप लंबे समय तक चलेगा और जितने भी पाउडर प्रोडक्ट्स आपने यूज किए हैं वो अच्छे से सेटल हो जाएंगे. एक और बोनस फायदा ये है कि द हाइलाइटर विच यू विल गोइंग टू यूज आफ्टर दिस विल ऑल्सो स्टे फॉर लॉन्ग. आई एम यूजिंग माई हैंड्स ओनली टू हाईलाइट हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस. दे आर चीक बोन्स. You have to apply exact on the high point of cheekbone, ना ऊपर ना नीचे. Brow bones के just नीचे and tip of my nose. Just make a straight line and just blend everything together. Now I will take a plain brush and blend everything together so that my makeup does not look patchy and cakey. This will give you a very smooth and natural look. Finally, we are at the last step. The lipstick that I am using it from L'Oreal Paris Rouge Signature in the shade I Lead. The formula is very light and does not dry no matter what. आपको पता ही नहीं चलता that you are wearing any lipstick. But it does not stay for that long. You will have to add a few coats to make it last. This is a beautiful rosy pink with brown undertone in it. Kind of everyday work wear for medium to light skin tone. Okay, I feel like adding little highlighter in the inner corners of my eyes. इससे eyes और ज़्यादा bright and बड़ी लगेंगी. So this is the final look guys. Please let me know in the comment section below if you liked it. Now let me quickly get my hair done and come back. And I am back. This is my final no makeup look which I kind of use for office, small gatherings, day party, etc. If you also try this look, don't forget to tag me on my Instagram handle.
Also, please give it a thumbs up if you find this helpful. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो what are you waiting for? Until we meet next time, stay safe and love yourself. Bye.